Hey guys, welcome back to my channel Statistics with Vivek. So चलिए start करते हैं अपना next topic. This is the part 3 of the discrete random variable. So let's try to finish this. So factorial combinations and permutations. So it is very much simple. First of all, yeah, let's get started. Factorial is nothing else. We have to just multiply the numbers till we reach 1. For example, if I have to calculate 7 factorial. Okay. Okay, let's first of all connect me a pen. Done. Why it is not working? It says that it's working and now. Yeah, now it's working. Now it's working fine. So चलिए शुरू करते हैं. First of all, we have to calculate the permutations, factorials. So like I have to calculate the 7 factorial, for example. Then the simplest way is to extend the number till we reach 1. For example, 7 into 1 minus number 1 minus that number, then 6 factorial. Then 6 factorial can be extended into 7 into 6 into 5 factorial. Then it can be switched to 7 into 6 into 5 into 4 till we reach 1. So we have to multiply all these numbers to get the number. Okay, so what is the common difference between the permutations and combination? The key difference between the permutation and combination is that in the combinations the order of output is not matters, but when we talk about permutations, the order is quite important in that case. For example, we have to calculate x c n, then its formula goes to be n factorial divided by x factorial into n minus x. So there should be a number. ठीक है. For example, we get 100. So what does it really means? It really means that if we have n which is around 100, okay, let's take some real values. Let's take some real values so that we can do all these stuffs. For example, we have to calculate 2c5, means that we have total 5 elements. Out of them we have to make combination of 2 elements. Okay, then how many possible ways there are? Then it can be goes to like 5 factorial upon 2 factorial into 5 minus 2, it's 3. Then we can extend 5 into 4 into 3 factorial into upon 2 into 3 factorial. 3 factorial cancels the 3, this is 2, then we receive 10. Basically 10 means if we have 5 elements 1 2 3 4 5 and we have to make the combination of two elements, okay, then let's properly draw these 5 elements. This is a white ball, this is a red ball, this is a yellow ball, blue ball, and then green ball. Out of them I have to make the combinations of 2 balls. Okay, then what should I do? As you know that the combination of white ball and red ball is equivalent to the red ball
and white ball. First of all, I get a red ball, then white ball, then this combination and this combination are equivalent. Okay, so order doesn't matter. Well, in that scenario, when order doesn't matter, we usually go with the combinations. But if the order matters, then we will continue with the permutations. I hope this process is clear to all. So let's forward toward our next topic, which is binomial probability distributions. So चलिए start करते हैं. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द बाइनोमियल थ्योरम. If you guys know little bit about it, what is binomial theorem or binomial expression? First of all, binomial expression. जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि x अगर एक रैंडम वेरिएबल है तो वो किसी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई सा भी हो सकता है, बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइसन एंड देन नेगेटिव बाइनोमियल, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा. अगर वो डिफरेंट अगर एक रैंडम वेरिएबल डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है तो उनके जो पीडीएफ एंड सीडीएफ होंगे वो भी डिफरेंट निकल के आते हैं. पीडीएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, एंड सीडीएफ मीन्स एट प्रोबेबिलिटी टिल दैट पॉइंट. ओके, so binomial expression is majorly equal to the this no a basically a binomial expression express can be in this part. Yeah, here is the accurate formula. It is the summation of combination of a n minus k into bk. Okay, so it can be expressed as a plus b whole power n equals to summation of combination of like n minus k, like k is the value to like how much the binomial expression is going to extract the values. KCN, then AK, and then B n minus k. Okay, so I hope it is clear that how's the binomial expression works and how's the values are defined in that scenario. As you can see that it's majorly a 11th class mathematics concept. Okay, so binomial probability distribution works on same principle. To identify a random variable follows a binomial distribution, first of all we have to check four major conditions, and these four major conditions are like there are n identical trials. First condition, for example, for each trial, the trial should be identical. There is no change in the trials. For example, if I am tossing a coin, then all these experiments should be same. They should be identical. The second condition is that for each trial, there is only possible outcomes are only of two. Like it can be a pass or fail or win or loss or something else. Like only two options are available to claim for a random variable. Okay, random variable can be pass or fail. Okay,
And probabilities or outcomes remain constant while the trials. While I am conducting the experiment, like tossing a coin 100 times or 1000 times, the probability of head or tail is not going to be changed because they are independent. That because the trials are independent, that's why they remain constant. Okay, so these are the four conditions which needs to be followed while checking the random variable is follows uh, binomial distribution or not. So consider the first example. In the first example, we can see that the coin is tossed by 10 times, and we have to determine whether it's a binomial distribution or not. Binomial experiment. So first of all tell me, first of all, like 10 ट्रायल्स हुए हैं तो हर एक ट्रायल आइडेंटिकल है? जी हाँ, वो आइडेंटिकल है. एंड देन उस ट्रायल के हमेशा दो पॉसिबल आउटकम्स हुए हैं? यस, पॉसिबल टू आउटकम्स. एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रही है? यस. ऐसा नहीं हुआ है कि अगर पहले मेरे टेल्स आ जाएं तो सेकंड पे टेल्स आने की, सेकंड टॉस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक्सटेंड हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्रोबेबिलिटी रिमेन रही है कांस्टेंट इन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. सो फॉर ऑल द 3-4 पैरामीटर्स द our experiment is proved to be true. Then in that case it's a binomial experiment. For the second question, you can try it by yourself. Just little bit think about it. So the PDF function. So I want to clear this thing once again. Like, what do you mean actually by the PDF and CDF? PDF is PDF and CDF. You can hear this like you can hear a couple of words while doing this chapter, like probability density function and probability distribution function. Okay, but on the major side I want to clarify that PDF, probability density function, belongs to the discrete random variables. Okay, first let me clear this. Random variable have two types: discrete and continuous. For the discrete, the PDF is probability distribution function, where we use sigma. But in case of continuous, it is probability density function. Okay, and in that case we use integration. Okay, and we have CDF for both cumulative distribution function and cumulative density function for both. Here we talk about density and here we talk about distributions. Okay, so let's go for the next item, which is P of X. PDF in the discrete random variable is expressed as Px at x. Random variables equals to x. This is PDF, and the formula for the PDF in that case is x and x combination of n p raised to the power of x and q have the power n minus x. Simple. So we can clearly say that if x is a random variable which follows binomial distribution, it needs only two parameters, n and p.
If I got N and P, I can easily calculate the PDF at any point. Okay, that's nice. So we have the mean and standard deviation for the uh, binomial distribution, which is mean equals to, particularly mean equals to NP, and summation equals to sigma equals to NPQ. And how does these value came? What's the process? So the process is quite simple. If you remember, how do we calculate the mean of a random variable? Mean of random variable mu is nothing else expectation of x. And what is expectation of x? Expectation of x is summation of xi into pxi. Okay. And in that case, the pxi is equals to, if x, like I have to extend this, as I have already told you, x is a random variable which follows the uh, I guess it's not moving. Sorry. X is a random variable and it is actually following the binomial distribution. Okay, binomial distribution with the parameter n comma p. So I'm going to explain you how does the mean of binomial distribution is equals to np and sigma is equals to under root of npq. I hope it's going to be clear to you guys. So expectation of x is nothing else summation of xi into pxi. And what is the formula for the pxi? It's x c n, then for the p it powers xi, and for the q it powers n minus xi. Okay, so this is the formula. So we have to calculate this function. So let's try to do this some pretty fun calculations here. Let's give a try. Yes, guys. So expectation of x is equals to the summation xi, and we have to extend the formula of combination here. If we extend the formula, it comes to be n factorial divided by x factorial and multiply by n minus x I factorial. Okay, so first of all, let's get simple on. First of all, let's write the full equation, and to make the things easy on the basis of notation, I want to clear that xi is going to be the part of summation. It is understood. Okay, so kindly for this simplicity I am going to remove the I, okay, from the equation, but later on I can include it.
So our next equation after this step is going to be x into x, sorry, n factorial upon n minus x factorial into में x factorial then p की power x q की power n minus x. If we extend the expectation of x, then this comes to be, if I really extend the things, then x into n factorial. How can I write the x factorial? X into x minus 1. That's quite easy. No rocket science here. If I am writing all the things in the correct way. Okay. Well, now in that case, x can be cancelled. And what we have now? What actually we have now is nothing else, the parameters. For example, I have to open the new slide. I can extend the portion of expectation of x some sort of like n into n minus 1 factorial divided by x minus x minus 1 factorial upon n minus 1 minus x minus 1. If you remember the into p की power x plus 1 minus 1 and p की power x minus 1 plus 1 and then q n minus 1 minus x minus 1. Okay, so what I have done here now is to, and my summation limit is going on till I to n. Yeah. So our initial equation, इससे पहली वाली जो इक्वेशन थी वो कुछ ऐसी थी. ठीक है, मेरे पास जो बेस था वो n माइनस एक्स था, x माइनस 1 था, काफ़ी वियर्ड सा था. तो मैंने सारी की सारी चीज़ें x माइनस 1 के हिसाब से कर दी हैं चेंज. फॉर एग्ज़ाम्पल जो x माइनस 1 था, उस फैक्टोरियल के हिसाब से मैंने ऊपर वाले फैक्टोरियल्स को चेंज किया. सब में से मैंने लाइक यहाँ पे मैंने -1 और -1 कर दिया है कि लाइक ये तो -1 है. ठीक है, मतलब मैंने इक्वेशन को एडजस्ट किया है अपने अकॉर्डिंग. ओके, लेकिन अभी भी इक्वेशन वो सेम ही है. जैसे कि यहाँ पे -1 और +1 ऐड करेंगे तब भी 0 हो जाएगा. यहाँ पे -1 है, यहाँ पे साइन चेंज होगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा. तो -1 + 1 रिमेन्स टू बी सेम. ओके ना. और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे साइन चेंज है, माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये इवेंचुअली 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन सेम रही है, बस लिखने का तरीका अलग है. तो नाउ माई इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल n को हम कॉमन है जो हम बाहर निकाल लेते हैं, विच इज़ n. एंड नाउ दिस +1, दिस +1 इज p, तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ. तो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन कम्स आउट टू बी n minus 1 factorial upon x minus 1 factorial n minus 1 factorial minus x minus 1 factorial. This is it. For the denominator part, p of x minus 1 and then q n minus 1 minus x minus 1.
अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पीडीएफ नहीं दिखाई दे रहा है एक तरीके से। यहाँ पे लिमिट हमारी 0 से n थी, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से शुरू हो रही है। अब इस लिमिट के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। अगर हमने अंदर वाले में चेंज किया, एक काम करते हैं कि जहाँ आई पहले 0 से शुरू हो रहा था अब उसे 1 कर देते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव कर देते हैं कि चीज़ें इक्विवेलेंट रहें। अब ध्यान से सोचिए, क्या ये एक्सप्रेशन क्या इस एक्सप्रेशन से मेल नहीं खा रहा है, विच इज़ एक्स सी एन पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस वन। एन क्या हो गया, एन माइनस वन। एक्स क्या हो गया, एन एक्स माइनस वन। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में है क्या, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है एन पी, एन ब्रैकेट में दिस कम्स आउट टू बी p plus q with the power n माइनस वन। अब ये कैसे बन गया, अगर आप लोगों को याद हो कि इवेंचुअली क्या हो, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन का वैसे बाय द वे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। और ये वैल्यू होती है 1, देन माई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी एन पी, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कौन सा फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। लाइक कहीं तो बताया था, हाँ ये रहा, दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, ठीक है। ये है, ये है, ये है, देन देयर आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू दिस। ओके, देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स निकल आई है हमारे पास। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट standard deviation for the x, and which is equals to like npq. And how does it came, we just find out the variance of x equals is nothing else expectation of x, or should I write like this, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू है हमारे पास, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने का एक दूसरा तरीका है मेरे पास, विच इज़ मैं सिमिलर वैल्यू निकाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन निकालना है। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करूँ तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। आपको ये वैल्यू पता ही है, आप इस वैल्यू को इधर ले जाके प्लस कर देना तो ये निकल आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम एक्स स्क्वायर कैसे निकलता, समीशन ऑफ, ये वैल्यू कैसे निकलती एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स इंटू पी की पावर एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग एल्स समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज नथिंग एल्स समीशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में पी की पावर एक्स। ओके, it's not a square. I hope it is clear. By doing all these equations we got the variance which is around npq. Okay, then these are some formulas to calculate the pdf for the
binomial distribution, which is around NPQ. Okay, so first of all, try this first example. We have to calculate we have the discrete random variable x, which follows the binomial distribution, and using the binomial formula we have to calculate the probability x equals to 5. Okay, simple. x follows binomial distribution having the n equals to 8 and p equals to 0.7, and we have to calculate x equals to 5, and this is slightly equals to the 5c8, then p की power 5 and q equals to 3. Just put their values and we can get it. How does the q can be calculated? Q equals to 1 minus p, because p plus q equals to 1. Okay, so this is how it guns, and this is the home, and the rest of the questions are homework. Please do it, and same for this question. Thank you. So I think it's already late, so let's wrap up this text. Okay, सो यहीं पे अपने टॉपिक को अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं. बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो हाइपरज्योमेट्रिक शुरू होगा, हाइपरज्योमेट्रिक एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ये बहुत छोटी वीडियोस रहने वाली होंगी आई गेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई